बिना नहीं दिल रजदा, तेनू तकिया बिना नहीं दिल रजदा, मोहल्ले विचों कूच ना करी, देवा वास्ता देवा वास्ता ओ बीबा सोने रब दा, देवा वास्ता बीबा सोने रब दा, मोहल्ले विचों कूच ना करी, तेनू तकिया बिना मेरे हर रंग राग सुरा विच बस गई है तेरी तस्वीर, जिन्हें वारिस जाने इश्क च डुब के लिख दिती है, दिन ऐसा चढ़िया मैं भी रंग जावा, खेड़ा इश्क दी होली मैं भी रंग जावा, लोकी कहंदे ने लोकी कहंदे ने लोकी कहंदे ने, रांझा मैनू अज दा मोहल्ले विच कुछ ना करी, तेनू तके बिना नहीं दिल रजदा। क्या बात है, माशाल्लाह, इतनी रोमांटिक। एक तो आज के यहाँ का मौसम भी। गाइज वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड दुबई लाउंज रज़िया सुल्तान के साथ, और शायद भी मेरे साथ ही हैं नहीं, लेकिन माशाल्लाह यू आर अ वेरी वेरी हैप्पी और चेयरफुल एडिशन टू माय शो ना। तो मतलब मेरी तो पार्टनर इन क्राइम बन गए। मौसम कितना प्यारा है गाइज। जरा मैं पकौड़ाज आ रहे हैं ओके आवाज आ गई गाइस। मैंने जब Kay2 शुरू किया था ना, एक ही उस पर मैंने शुरू किया था कि यहाँ पे मौसम के हिसाब से चीज़ें मेरे लिए खाने के लिए आएंगी। ऑल्दो मैं आई एम डाइटिंग, लेकिन मुझे चाय और पकौड़े चाहिए होती हैं जब बारिश हो। एंड ऑफ स्टोरी। मैं अपने दोस्तों को भी बता रही हूँ मतलब मेरे साथ दोस्ती का बस यही है। और यहाँ पे एक्चुअली मैं जो डाइटिंग में मैंने शुरू की थी, मुझे किसी ने कहा था कि वंस यू लाइक यू नो एक सर्टेन टाइम होता है कि उसके बाद जो आप इतने जंक फूड और सारी चीज़ें खाते हो ना, चाहे वो आपके दांतों से रिलेटेड हो, बॉडी से रिलेटेड हो, सेहत से रिलेटेड हो, यू हैव टू टेक केयर। वो एक जवानी वाला अच्छा वाला टाइम होता है ना कि बस हम कुछ भी खा लें, फ्रेंच फ्राइज खा लें, ये खाओ अभी भी एक टाइम होता है, एंड देन आफ्टर दैट यू हैव टू टेक केयर। और आजकल के ज़माने में आई फील कि इतनी ऐसी चीज़ें हमने देखी हैं, ऐसे लोगों ऐसी उम्रों में जाके देखे हुए हैं कि यू लाइक यार थोड़ा सा अपना ख्याल रखें। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि शदीद डाइटिंग करें, अपने आप को ख़त्म ही कर दें। आप कुछ भी खाएं पिए जी, तो आपको डेली बेसिस में 10 से 15 मिनट वॉक करना ज़रूरी है। जिससे आप मैं नींद में ख्वाब नहीं करते। मैं बस देखो, मैं इतना करती हूँ कि मैं आई डोंट टेक द लिफ्ट अनलेस मैं हील्स पहनी हुई हूँ। मैं लिफ्ट भी नहीं लेती हूँ, और मैं गाड़ी बहुत दूर पार्क करती हूँ ताकि मुझे पैदल जाना पड़े। वो मुझे मेरी एक फोर्स्ड, जैसे मैं कमिटी सिस्टम मैंने इसलिए शुरू किया ना, कमिटियाँ डालती हूँ ताकि मैं फोर्स सेविंग हो मेरी। वैसे तो सेव नहीं होती है, लेकिन जब आपने कमिटी डाल दी तो एक ऐसे निज़ाम पैदा कर सकते हैं, या एक ऐसे हैबिट पैदा कर सकते हैं जिसकी वजह से आप फोर्स्ड। तो ये जो मैं अभी भी पार्किंग भी की है, मैंने काफ़ी दूर की, तो वहाँ से चलती आ गई, और फिर चलती जाऊँगी नो फोर्स। वैसे मैं घर पे ना या तो टिकटॉक कर रही होती है या तो सो रही होती है। टिकटॉक पूरा दिन मारती? नहीं, पूरा दिन नहीं करती। मैंने वो भी बहुत कंट्रोल कर लिया अपनी सैनिटी के लिए, क्योंकि मुझे माइग्रेन्स होने लग गए थे बिकॉज ऑफ टू मच। हम लोग समझते नहीं है सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें एक्चुअली रियल है। आप जब बहुत स्क्रीन को देखते हैं ना, तो उसकी भी रेडिएशंस होती है, उसकी भी बहुत होती है, और नज़र भी वीक होती है, माइग्रेन्स भी होते हैं। आपको पता है लोगों की नींदें भी ज़रा कम हो गई हैं बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, इट इज़ बिकॉज वो जो रेडिएशंस आपकी आंखों में जाती है ना, नींद उड़ जाती है जी। एवरीथिंग इज गुड एक हद में करें। मैं नहीं कहती, मैं खाने पीने के भी कहती हूँ, बर्गर भी खाए लेकिन नॉट एवरी डे, फ्रेंच फ्राइज भी खाए लेकिन नॉट ऑल द टाइम। सिमिलरली हम लोग जब हमारे पास जो आज की मेहमान है वो डेंटिस्ट है, और मैंने डेंटिस्ट इसलिए भी लिख आई थी बिकॉज मुझे काफ़ी लोग हमेशा से, इवन ऑन सोशल मीडिया, हमेशा से मुझे एक चीज़ की बहुत कॉम्प्लीमेंट्स जो मिलते रहते हैं बिकॉज ऑफ माई टीथ। लेकिन वो अटेन करने के लिए भी यू नीड गुड डेंटिस्ट, गुड ओरल केयर, गुड हैबिट्स। अब मैं जितनी भी नींद भी हूँ ना, ब्रश करना ज़रूरी हो जाता है।
जितनी भी मैं वो नहीं होते कि लाइक आई डोंट वांट टू, फिर भी मैं फ्लॉसिंग करती हूँ क्योंकि हमने खाने पीने ऐसे खाए होते हैं ना कि फंसे हुए होते हैं। अब जो खाना फंसा होता है उसको निकालना भी ज़रूरी होता है, बहुत जरूरी। तो फ्लॉसिंग हम तो सिर्फ बोटियां काट के साइड दे जाने, हालांकि उसको दोबारा ब्रश करना चाहिए। ब्रश से ज़्यादा आपको फ्लॉसिंग की ज़रूरत होती है। तो वो जो फंसते हैं ना तो वो बाद में कैविटीज और वो सारी चीज़ें बनती हैं। मैंने बचपन में काफ़ी चॉकलेट्स खाए, मेरे पहले सेट्स दांत जो थे ना, मिल्क टीथ जिसे कहते हैं, वो निकले नहीं है, वो जड़े हैं। मैं बहुत लाडली थी तो अबू मेरे लिए हर जैसे ही जाते थे चॉकलेट का कुछ लेके आते थे, केक लेके आते थे, वो प्यार 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 से। मैं मोटी नहीं हुई, ये बड़ी बात है। मैं वैसे मेरी अभी जाके थोड़ी बहुत मैं सेहत गेन करती हूँ, मैं कभी मोटी नहीं होती थी, बस मेरे दांत सारे खराब होते थे, पिंपल्स आते थे, जब टीन्स आ गए तो पिंपल्स आते थे। ऑल दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर चीज़ का ख्याल रखना। मेरी अभी अल्हम्दुलिल्लाह स्किन भी उसकी वजह से क्लियर ही हो गई, क्योंकि अगर आप खाना पीना सही कर देते हो, आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपके खाने पीने से आते हैं, आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम्स। और ये चीज़ बहुत लेट समझ आई लेकिन आ गई। अब जिनको समझाते हैं उनको समझ नहीं आती। मेरे उस्ताद जी कहते हैं कि बेवकूफ ने समझाना तो एक समझदार ने समझाना। मैं कहता सच ही हो कि बेवकूफ को समझ नहीं आनी और समझदार ने कहना मुझे सब पता है। हाँ, तो किसको समझाना है? उस्ताद जी कहते हैं सिर्फ अपने आप को समझाना और किसी को नहीं समझाना। क्या बात है। तो ये बात है ना, मैंने इसलिए कहा ना कि आप मेरे पार्टनर इन क्राइम अच्छे हो। अब मैं कब से पकौड़े खाने से सब समझदार इंसान पकौड़े खाने चाहिए। समझदार इंसान बताए पकौड़े खाने समझदार अब या तो समझदार होगा या बेवकूफ होगा। समझाना दोनों सूरतों में किसी को समझाना नहीं है। या पल्ले बांध नहीं, मुझे ऑलरेडी पता है कि मैंने खाने, लेकिन मैं पकौड़े खा सकते हैं ना, खा सकते हैं ना। हाँ गाइस खा सकते हैं। ओके, मैं पकौड़े आज खाऊंगी, मैं जाके फिर आज वॉक के लिए भी जाऊंगी ताकि मैं पकौड़े खा के वॉक करूं। मौसम बड़ा अच्छा हुआ है दुबई। हाँ नहीं मौसम कल बारिश पड़ी थी, अभी आते वक्त भी बारिश हल्की हल्की सी। कल रात को तो काफी थी। अच्छा, मैं जब पहली बार हम यूएई की जो आवाम है ना, जो बच्चे यहाँ पे पले बड़े हैं, हमारे लिए जो बारिश है ना वो बहुत ही एक प्रेशियस चीज़ होती है। मैं जब यूके पहली बार गई, ओके, बारिश इतनी खुश थी, मैंने कहा बारिश, यस। छोटू मेरा छोटू था उस वक्त, और मैं बारिश। दूसरे दिन उठी बारिश, तीसरे दिन हाय बारिश आज भी, चौथे दिन मैंने कहा बारिश सुबह से लेकर रात तक, फिर पांचवें दिन में कहा बारिश। फिर मैंने किसी से पूछा, मैंने कहा यहाँ बारिश बंद नहीं होती, क्योंकि मुझे बाहर भी निकलना था, सही तरीके से बंदा नहीं निकल सकता है। फिर उन्होंने कहा नहीं, फिर होती है, बस होती रहती है। छठे दिन में दुबई आ गई वापस। हर चीज एक लिमिट में होना चाहिए। और हम लोग दुबई के जो लोग होते हैं, हम लोग उठते ही 11-12 बजे उठते हैं, और वहां पे हर चीज 3-4 बजे तक बंद है। तो खाना पीना करते करते हर चीज बंद। मैं दुबई में सही हूँ, ऐसे करते हैं ना, दुबई ठीक है ना। चले गाइस, इसी पे ना हम एक ब्रेक ले लेते हैं। दिल के शहर में घर मेरा हो गया। ओ
सपना देखा जो तूने वो मेरा हो गया डूबे तो यूं जैसे हो राधा ये प्यार क्यों होना था? ये प्यार क्यों होना था? टाइम होता है ना उसका। एक टाइम होता है। अच्छा, वेलकम बैक गाइज, वेलकम बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। और हमारे गेस्ट आ चुके हैं हमारे शो में। अच्छा, आप जब एक इंसान को देखते हो, औरत की बात नहीं कर रही हूँ, एक इंसान ही औरत की होती है। हाँ, नहीं, मैं इस वक्त गुस्से वाली मूड में हूँ। जब एक इंसान को देखते हो, सबसे पहले आपको क्या चीज़ नोट करते हो उनके चेहरे पे? उनके फेस एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशंस में सबसे मेन चीज़ क्या होती है? उनके दांत अच्छे हैं। ओए होए, आई पास्ड इट ना, मैंने पास कर लिया ना। गाइज, वैसे तो खुशी इंटरनल होती है, यू शुड बी हैप्पी, यू शुड बी पॉजिटिव एंड ऑल, बट एक स्टार्टिंग स्टेप जो होती है ना, वो आपकी स्माइल होती है। तो आज जो हमारे दोनों गेस्ट है ना, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग मैनी ब्यूटीफुल स्माइल्स इन दुबई। आई थिंक दुबई से आगे भी इन्होंने काम किया, कि वो पूछ लेंगे हम, लेकिन दुबई में तो जो ब्यूटीफुल स्माइल की बात आती है, तो ये दो नाम ज़रा काफ़ी आगे पीछे लोगों को नज़र भी आते हैं, और इनका काम speaks for themselves, like you know. तो आज के जो हमारे शो है, we are going to talk about dentistry. the terms भी नहीं आते, लेकिन we are going to talk about teeth, we are going to talk about common problems, we are going to talk about anything. जिस अगर आपके पास कोई सवाल जवाब भी, आप कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन we are going to actually try to discuss what it takes and what it doesn't take to have a beautiful smile. आज की जो हमारी सबसे पहली गेस्ट हैं, इनको जब मैं मिली थी तो वेरी हम्बल पर्सनालिटी, आई मेट हर ऑन सोशल मीडिया, लेकिन ऑन उसके बाद हम एक्चुअली वी बिकेम फ्रेंड्स, वी मेट, एंड द वन थिंग दैट आई कैन से अबाउट हर इज़ लाइक शी इज़ अ ब्यूटीफुल सोल। डॉक्टर अपनी जगह पे, डॉक्टर आज उन्होंने मुझे कन्विंस करने के लिए उन्होंने कोट भी पहना है कि मैं डॉक्टर भी हूँ रज़िया, आप मुझे कोई हल्का ना ले। माशाल्लाह माशाल्लाह, शी इज़ समवन विद अ लॉट ऑफ नॉलेज। सोशल मीडिया पे भी जब भी मैंने उनको लाइव में भी देखा है बैठे हुए, तो लोगों को बाकायदा कहती हैं कि आस्क मी क्वेश्चन, ये मेरी स्पेशलिटी, मुझसे कुछ तो फ़ायदा लो। तो ऐसे जो लोग होते हैं ना, वो ज़रा से अलग ही होते हैं इस दुनिया में। एंड मिलते हैं डॉक्टर सैन। वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू? थैंक यू फॉर एट लास्ट 6 महीने के बाद, जद्दोजहद के बाद हम इकट्ठे बैठे। फाइनली, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। बहुत अच्छा लगा। और जैसे आपने बोला कि इट्स लाइक अ चांस ऑन अ ग्लैम, लाइक ब्यूटी विद माइंड्स के साथ, और अपनी ये स्माइल को हम इन्हांस कर देते हैं। जी। तो थैंक यू। नहीं, मतलब आई फील के मैं अपने बेटे से जब शुरू में पूछती थी ना कि वाई डोंट यू स्माइल टू मच, तो वो कहते थे कि आपकी तरह स्माइल तो नहीं है ना मेरी। तो दैट यूज टू मेक मी फील, क्योंकि वो बहुत सारे लोगों को यही इसी वजह से हंसते भी नहीं है ज़्यादा खुल के। आई वुड से इट्स बिकॉज दे थिंक दैट उनकी स्माइल अच्छी नहीं है या उनके दांत अच्छे नहीं है। बहुत कम होते हैं जो उसके बावजूद भी मेरी तरह कर होते हैं। but still some people don't have that much confidence, so your job is not only हम उनका कॉन्फिडेंस डेवलप कर देते हैं, Exactly. क्योंकि वो जिस चीज़ से हेजिटेट हो रहे होते हैं कि स्माइल नहीं देना, कि हमारे टीथ नजर आएंगे, ऐसे होएगा, तो हम उनमें वो कॉन्फिडेंस ले आते हैं। Can we know a little bit more about Dr. San? Yeah, I'm Dr. San. I was graduated from Pakistan, Lahore, and I moved in UAE in 2016. I worked as a medical director and clinical manager, and now I'm working in Arham Medical Center with my aesthetic expertise. तो अब प्रॉपर फुल टाइम जॉब है? It's like full time, yes. फुल टाइम, ओके। थैंक यू सो मच। हमारी जो सेकेंड गेस्ट हैं, ही इज़ पर्सनली वेरी क्लोज टू मी बिकॉज ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर माई स्माइल, एंड आई वॉज आफ्टर हिम। मैं काफ़ी वक्त से इनके पीछे लगी हुई थी कि मेरे शो पे आपने आना है, बिकॉज आई पर्सनली हैव एक्सपीरियंस्ड हिम, सो मुझे I wanted to thank him in my own way, and yet show the world
कि हमारे पेशावर से भी अच्छे खासे we have such talent and such people with one of the best, I would say one of the best veneers and everything that I've seen around. वो इनकी तरफ से ही था. Dr. Shakir, thank you so much for at last accepting our. It's an honor for me. Shakir, honestly, one of my best. I won't say in the field, but one of the best people I've met. Thank you for that. Thank you so much for coming into our lives, mine and Safan's lives. हमारे पास एक वीडियो भी है, later on हम दिखा भी देंगे. We can play that. तो we have done a little bit, me and my son, we have done a little bit for him also. The whole world will see on TV my son for the first time. वही वाली वीडियो भी है? It's the same one. अच्छा, okay. तो you guys will see my son also for the first time, और हम दोनों की स्माइल डॉक्टर शाकिर की तरफ से. Is it ready by any chance? हम लोग after इनको हम जरा इंट्रोडक्शन कराते हैं. आप अपनी थोड़ी सी अपने बारे में बताएं. When did you come? Alright, so हमारी मीटिंग बाद में बताएं. Yeah, how it happened, I did my dentistry from Pakistan in 2012. After that, I went for my master's in England in general dentistry, and after that, I went back to Pakistan. COVID happened. I already had a job. I was doing my second master's, but then I froze that, and I got a job offer here, and there was no looking back, and here I am practicing all sorts. COVID ने बहुत सारी चीजें आगे Yeah, but for me, to be honest, it was a blessing in disguise. It worked wonders for me. I could tap in from so many different areas that I didn't know that I was passionate about. So, yeah. Those areas? The areas where I fell in love with gardening. Gardening? Yes, I fell in love with landscape artistry. Yeah, so. मैंने सोचा आज लव की बड़ी बातें हो रही हैं, बारिश भी हो रही है, पता नहीं कौन सी लव आने वाली है. No. It was gardening. So now it's my newfound love. Yes, absolutely. Okay, wow, mashallah. Thank you. And I have another thing to ask you normally now. Absolutely. I have other things to ask you. Absolutely. अच्छा, Dr. San, when you got into वो जो doctor वाला side, my dad also wanted me to be a doctor, like all others. So why dentistry? First, it was my father's dream. Secondly, I want dentistry या doctory? Dentistry. Wow. Yeah. Okay. My dad is just this doctor जोड़ा शाह. That's it. Doctor जोड़ा शाह. I want to be a teacher, but my father says नहीं बेटा तुम dentist बनोगी तो मुझे proud feel होएगा कि मेरी बेटी डेंटिस्ट है और लोगों को स्माइल देती है. सो आई थॉट कि हाँ आई शुड डू दिस बिकॉज एटलीस्ट मैं किसी की पर्सनालिटी डेवलप कर सकती हूँ, किसी में कॉन्फिडेंस दे सकती हूँ कि यू कैन डू इट. सो फिर ही पास्ड अवे एंड देन आई सेड नो आई हैव टू डू इट. सो आई बिकेम अ डेंटिस्ट. Okay. So you basically fulfilled this dream. Yeah, that's right. But the thing, and I feel very proud when I do some work like root canal, cavity filling, or veneers, and when they says, "Doctor, thank you so much. You have made my day." I feel something that I have done something for good. Yeah, I have made someone happy, someone comfortable. ऐसे doctors जो होते हैं वो वैसे भी they are a gift to mankind. Right, true. Because they are helping God in healing the world also in a way. अच्छा जी, आप कैसे dentist बन गए? So I knew I was going to be a dentist in 6th grade. No, but then आपकी family background तो अलग ही था. Yeah, I belong to a family of civil servants and people who work in the judiciary, and so I was. Seriously, man. Yes, absolutely. So 6th grade was when I knew that I was going to be a dentist. मुझे पता था. Yes, absolutely. किसी के दांत तोड़े थे? No, my father. किसी के दांत तोड़े थे? क्या किया था आपने मुझे बताइए? No, my father's dentist. He was in Islamabad, and I found him to be pretty cool. He had the personality. He used to play the guitar. He was very calm in his personality that way. So I could look up to him, and I think I was in 6th grade at that point, and I was that's where you get your. Exactly. So guys, he plays amazing rabab, but unfortunately हम यहाँ पे नहीं दिखा सकते. Circumstances unforeseen, we could not. But honestly, इनके पास, if you sit from his music collection to his work, the perfection, you're like, so it gives you that whole
ambience. Perfection. नहीं ambience भी देते हैं. Okay. Coke Studio मोहतरमा क्या सुनेंगी आप? Oh, that's good. That's good. Nice. So but yes, So yeah, 6th grade was when I knew कि मैंने dentist ही बनना है. Dentist ही बनना And है. yeah. So you basically had someone that you liked. Yes, he still is my mentor, to be honest with you. Whenever I'm stuck somewhere or when I need life guidance, Dr. Wow. Zirak, I'd like to mention his name. He's in Islamabad. I go back to him. I ask him about the guidance. So if I ever go to Islamabad, Oh I'll go yes, there. if anybody ever goes to Islamabad, Yeah. he's the guy. Like my mother now goes to him. There's so many dentists in Peshawar. Mama doesn't come to you? No, I would You not. know, Mama doesn't come to you? I would not want my mama to come to me. Mama, मुझे बता देती पहले. Dal barabar, absolutely. No. Yeah, anybody who's in Peshawar or who wants dentist's referral, I नहीं always inshallah, send inshallah, him we to him. definitely. I would like to see who the person I admire so much. Who does he look up to? Absolutely. Who do you look up to in this field? Actually, we were the very first doctors in our family. So अच्छा. that is why my father's dream was that कि कोकी तुमने डॉक्टर बनना है, तुमने डेंटिस्ट बनना है. And then my कोकी, he used to call me I heard cookie. no कोकी नहीं, कोकी, कोको मोको he used to call me. So कोकी प्यार से कहते थे कि कोकी तुमने डेंटिस्ट बनना है. मैं चाहता हूँ कि हमारी फैमिली में कोई डॉक्टर आए. तो we were very first doctors in our family. तो फिर उसके बाद जब ये हुआ तो जब भी मैं किसी क्लिनिक में जाती थी तो मेरा फोकस होता था कि हाउ डॉक्टर्स वॉक, हाउ दे डू एंड हाउ. इस तरह से फिर आई मेट माय प्रिंसिपल डॉक्टर यूसुफ. ही वाज अ पर्सनालिटी विद pride. So after watching him, after looking him, I said, नहीं, yeah, I have choose the right profession to be in there. Because वो जिस तरह से कहते थे, and he also told us कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता. Whenever you want, if you need to help someone, this is the field where you can also help them. Yeah. So I use both medias to do my things. So I'm very much thankful to Dr. Yusuf. Allah उनको जन्नत नसीब करे. Now he's no more, and he was a great person. MashaAllah. That was a wonderful intro to both of them, and I think हम लोग छोटे से एक ब्रेक लेते हैं. I hope पकौड़े आ गए हो. आपकी दुआ कबूल होगी. मेरी दुआ कबूल होगी. चले इसी आप पकोड़े खाए, मैं थोड़ा गाना सुना दूं. इरशाद इरशाद. सावन की भी रातों में जब छेड़े सखियां बातों में दिल को पकड़ कर रह जाती हूँ, पूछना कैसे शर्माती हूँ. कुछ खेल नहीं रंग रलियों में, गाँव की सूनी गलियों में मैनू याद तेरियां आउंदियां ने ओए, मैनू याद तेरियां आउंदियां ने ओए, मैनू याद.
जलवों में बसर हो ये जरूरी तो नहीं, हर शबे गम की सहर हो ये जरूरी तो नहीं, नींद तो दर्द के बिस्तर पे भी आ सकती है, उनकी आगोश में सर हो ये जरूरी तो नहीं, सबकी साकी पे नजर हो ये जरूरी है, मगर सब पे साकी की नजर हो ये जरूरी तो नहीं, आप बैठे हैं बालिग पे मेरी, आप बैठे हैं बालिग पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है, आप बैठे हैं बालिग पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है, मौत मुझको गवारा है लेकिन, मौत मुझको गवारा है लेकिन, क्या करूं दम निकलता नहीं है, मेरे नालों की सुनकर जुबानें मोम हो गई, कितनी चट्टाने, मेरे नालों की सुनकर जुबानें हो गई मोम, कितनी चट्टाने, मैंने पिघला दिया, मैंने पिघला दिया पत्थरों को, एक तेरा दिल पिघलता नहीं है, ये अदा ये नज़ाकत मरासिल, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, लेकिन क्या संभालोगे तुम मेरे दिल को, क्या संभालोगे तुम मेरे दिल को, जब ये आंचल संभलता नहीं है, जब ये आंचल संभलता नहीं। सही बात है, वेल डन वेल डन। और ये बिल्कुल ये जो आंचल नहीं संभाल सकती, मतलब आंचल उठा के फेंक देती है, बिल्कुल दिल नहीं संभाल सकती, सुना ना जो लोग लाइन में खड़े हैं, मैं बिल्कुल दिल नहीं संभाल सकती, मुझे बस पकौड़े खिलाए। नहीं नॉट लिटरली, I have the best friends in the world. अच्छा एक चीज है, now when I was eating, okay, और immediately you have this sort of smell in your mouth और वो चीजें होती है। As a dentist, मैं हमेशा से डॉक्टर शाकिर से भी ये मैंने इनकी जब ये बिल्कुल मेरे मुंह के अंदर यूं कर रहे होते हैं ना, okay, यार हाउ डू यू डील विद पीपल जिनकी मुंह सी, हाउ आप शुरू कर ले, आप शुरू कर ले, because he deal with you ना। I will not give what I found. I will not tell what I found inside. I'm just joking. It's basically there are a few factors which factor into spelling your mouth smelling bad. A few things you should incorporate in your practice, in your daily oral hygiene practices are, you should obviously goes without saying, brush your teeth, but you should make a conscious effort of the brush going to all the desired areas, not just your front teeth which are shown to the world. Number one. Number two, you're supposed to floss your teeth. All of us we ignore karte hain flossing your teeth. This is where I get my general knowledge from. That, and there's one other factor. I'm sure, to be honest, most of us, we don't scrape our tongues when we're brushing our teeth. So tongue scraping with the back of your toothbrush, that is also उसके ऊपर जो वो exactly हाँ, वो जो rugaze वो डिजाइन नहीं present, होती है, exactly. वो डिजाइन नहीं होती That है। is supposed for you, so you reason कि आपने उसको tongue को अच्छा, scrape you know, till I learned that from you, I used to be so particular about, even without knowing that ये जरूरी है, कि when I used to brush my teeth, मैं अपने दांतों के साथ कर रही होती थी। Why? Because it scrapes along the surface. I know, but it used to help me. Like, it was a mental thing. हालांकि it was not something that was taught to me, but because we are so this thing about cleaning, cleanliness, it's a part of cleanliness. और ये बहुत सारे लोग समझते ही नहीं है इस चीज को। ये भी ये एक part of cleaning your mouth है। Absolutely. Mouthwash.
Mouthwash is mandatory for smell and everything. You want to answer? Yeah. आपने पूछा ना कि हम लोग डील कैसे करते हैं स्मेल को ना, तो आपने कभी स्मोकर्स को देखा है? हाँ, दे स्मोक अ लॉट, yes. लेकिन I उनको don't खुद even go से near them. नहीं, आपको उनको खुद नहीं से नहीं, I don't even go near them. Guys, if you're a smoker, don't come near me. मैं best. So, आपको अपने प्रोफेशन से जब इश्क हो जाता है तो आपको नो मैटर्स के क्या है, आपने मास्क पहना और आप अपने काम में लग जाते हो, नो मैटर्स के कितनी स्मेल आ रही है नहीं आ रही है, बिकॉज यू आर इनटू योर प्रोफेशन. True. सो अगर हम ही कहेंगे हाय स्मेल आ रही है, तो हाउ वी विल वर्क विद दैट? So we have to overcome our fears and everything. And So you then don't we tell have them to- go brush your teeth first No. and then come to me? We do give them mouthwash to rinse first before Okay. opening their Okay, mouth, so okay. that it will help us and them also. कि हम उनको रिंस करने देते हैं कि रिंस करके आ जाओ चलो, फिर जो भी उनको आता है फिर हम उनको बता देते हैं. और जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन होता है कि माउथ वॉश कौन से ब्रांड का यूज़ करें हम लोग. हाँ. We usually don't recommend brands, but we recommend them mouthwash according to their need. What is useful for them, जो उनकी complaints है उनको कौन सा mouthwash overcome करता है. तो we recommend that mouthwash, either whatever the brand is, but thing is they have to follow the instructions properly. ये नहीं कि mouthwash खरीदा और जाके रख दिया. We have to tell them that you have to use it as well. हम लोगों को फ्लॉस कहते हैं, फ्लॉस करना है, वो बड़े शौक से जाके ख़रीदते हैं लेकिन they don't do it. So please stop doing this. अगर आपको डेंटिस्ट कह रहा है कि you have to do it, please use it. और twice a day, half cap of mouthwash in a water. Twice a day? Twice a day. I do it once. Sorry sir. It's not a problem. It's Sorry sir. understandable. एक ही बार करती हूँ. But I do it But once. अगर Yeah. ट्वाइस अ डे कहते हैं, वंस अ डे भी कर लो, इट्स गुड, बट आपको अपनी हैबिट डेवलप करनी पड़ती है. आहिस्ता आहिस्ता करोगे तो आप कर सकते हो, एंड अदरवाइज इट वोंट वर्क. अच्छा, मुझसे ज़्यादा he has made my son very Particular about particular He's more about particular. himself, To क्योंकि be honest, उसने he's सारी a- चीज़ें घर में रखी हुई हैं. Yeah. तो I kind of am blessed कि मुझे जाके कुछ लेके आना नहीं पड़ा. Last time when, sorry to cut you off, but last time he came in, he has a bag. He has a bag. And He carries it he with him. carries a floss with him in the bag. So he says, That's whenever good, that's I'm good. Yeah. done Because he's with my out with meal, friends yeah, and all, तो वो- absolutely. और इसलिए मैं भी And very young age से अगर ये आपकी Exactly. आ So I जाए ना तो then appreciate you that. You know, it's usually amazing. people says that tea coffee हम नहीं पीते, तो I said why you want to like आप छोड़ना क्यों चाहते हो, why you want to keep brush with you, keep Yeah. mouth वो tablets मिलते हैं अपने पास रखो, आप कॉफ़ी पियो, जाओ जाके rinse करो, why you have to leave it. What about those wipes that you get? Wipes Wipes for भी what? मिलते हैं teeth के सफान के I पास. haven't come across them, to be Okay, honest. सफान के पास है it's like to clean your All teeth. right. तो I वो wouldn't भी know. use करता है, like you know if he doesn't, he's out. But no, and- you don't have to be like. In my opinion, you don't have to No, be but so if he doesn't have aggressive. no, Yeah, if you have, yeah. you don't have to be so aggressive. As No, long he as- is. If he yeah. keeps it, if in case brush भी नहीं कर Yeah, पाए, yeah, कुछ भी नहीं कर पाए, exactly. तो he has So something. that definitely, He keeps as an options. aid, it helps. He's very, very absolutely. good at that, Yeah, keeping but options. as long as you're brushing properly with that required 2 minutes of your time, and you're making a conscious effort of Yeah. making sure the brush goes to all desired areas, I think you're अच्छा, good. what is the most common problem आप लोग को जो common दिखे तो मुझे बचपन से Bleeding of gums, बचपन से ही आई थी. bleeding of Absolutely. gums, Bleeding gums. discoloration. Bleeding gums तो मेरी भी काफी. Yeah. Mostly people with are coming with bleeding gums में bleeding brush करते हैं, bleeding होती है, हाँ. क्या वजह है, ऐसी वजह. तो ये एक इसकी होती है अंडरलाइंग कॉजेज़ भी आपको देखने पड़ता है. इट्स नॉट लाइक कि आपके गम्स आर नॉट हेल्दी, अंडरलाइंग कॉजेज़ भी होती हैं, हार्मोनल चेंजेस होती हैं, आपकी इन्फ्लेमेशन होती है, आपकी ओरल हाइजीन का मैटर करता है. सो इफ दीज और फैक्टर्स आर देयर देन The brush also has to be different. ब्रशेज आर ऑल्सो डिफरेंट. सॉफ्ट ब्रश होते हैं, मीडियम होता है, हार्ड होता है. तो ब्लीडिंग जिनको बहुत ज़्यादा होती है, हाँ वी यूजुअली रिकमेंड देम टू यूज़ सॉफ्ट ब्रशेज एंड डू प्रॉपर ब्रशिंग. ब्रशिंग करने का मकसद ये नहीं होता कि आपने छिक 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 ऐसे ऐसे जोर जोर से किया और बस खलास, नहीं, ये नहीं. There There is a proper way to brush. Absolutely. Exactly. If you are not doing that, चाहे आप दिन में 3 दफ़ा ब्रश कर रहे हो, 4 दफ़ा ब्रश कर रहे हो. हम लोग नॉर्मली अपनी जब टीथ ब्रश करते भी नॉर्मली आई रिमेंबर व्हेन आई केम टू यू द फर्स्ट टाइम, हम लोग आगे से करते हैं, पीछे से करते हैं, बट देन देयर आर थिंग्स इनसाइड. Absolutely. So I can जो- tell you different ways of basically when you're brushing your front teeth. Just remember, it's never left and right. It's always circular. So when Okay. you're brushing your teeth from the front, it has to be circular motions. Okay. If they're your upper teeth, circular motions, and then swipe down. If they're your lower teeth, circular motions, swipe up with the last stroke. Okay. Similarly, left and right, Ding ding ding. circular ding. motions. Yes.
and then swipe up. That's for the lower Okay. teeth. And on Okay. the inside of your lower teeth, it has to be vertical, so you go up and down. यूं. Absolutely. तो ब्रश को यूं Absolutely. you get And to clean especially the inside of your uppers, which is a self-cleansable area, but still, if you're doing your upper teeth. What and about the your- automatic brushes जो लोग Rotary, yes, they do help. But look, the rotary can only do things if you take it to the desired place, yes? So that Yeah. rotary is doing the circular motion for you, but if you don't take it to your back teeth, how can it clean your teeth in the first but place? they are Absolutely as helpful, Helpful, yes, yes, absolutely. exactly, I will yeah. not deny that. helpful. Okay, so it's Do not I too use harsh. a rotary toothbrush? No, I do not. But yes, as long Okay, as okay. you're taking it to the desired place, that's what I think. क्योंकि I think वो people खरीदते Not इसलिए every क्योंकि person everybody can thinks buy that It will do a help, better yeah. job. Well, But not every person yeah. can buy it as well. So it's better. Conventional ways are always better. So, but जो ले सकता है, we prefer them to take it because it's Absolutely. easy to use. ओके मुझे एक चीज़ बचपन से एक चीज़ का वो है कि इतने सारे टूथपेस्ट होते हैं, कोई येलो, कोई पिंक, कोई रेड, कोई ग्रीन, कोई I mean, I'm going to go for a short break and have a little bit of a chorus because I need energy for this because I'm sick and tired of this question or mental thing. I will come back after a short break and मैं यही सवाल टूथपेस्ट के ऊपर करूँगी. Welcome back, guys. A very refreshing break. We do have very less time. I don't know how time flies with my guests. मुझे पता नहीं चलता है क्यों यार ये क्यों ऐसे होता है. But then we were discussing the toothpaste. तो आप टूथपेस्ट के ऊपर थोड़ी सी रोशनी डाल सकती हैं. Toothpaste brand कोई भी हो, कुछ भी हो, it's better to switch always. एक मतलब brand BK use से नहीं. related इनका कुछ It's होता है nothing. कुछ. मैटर करता है आपकी टेक्निक पे. Okay. हाउ यू ब्रश. ब्रांड कितना भी हो, ज़रूरी नहीं है कि आप ब्रश के मतलब ब्रिसल्स जितने हैं आप तो उतना all पेस्ट लगाओ. everything is the same. एवरीथिंग इज सेम, बस फ्लोराइड. अच्छा बहुत सारे लोग वाइटनिंग का सोचते हैं तो जो देसी टोटका वगैरह करते हैं बेकिंग सोडा यूज करते हैं. इज दैट गुड? It does help, but yeah. आफ्टर professional, इफेक्ट्स yeah. फिर बहुत. व्हाट आर द आफ्टर इफेक्ट्स? समटाइम्स होता है कि आपका एनामल बिल्कुल चिप ऑफ हो जाता है, सेंसिटिविटी हो जाती है, हाइपर सेंसिटिव हो जाता है बहुत ज़्यादा. और फिर लोग कहते हैं कि भाई हमारे बहुत सरसराहट होती है, ज़रा आइसक्रीम भी खाते तो वो सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा हो जाती है. तो उसको ओवरकम करने के लिए फिर हमें बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं. विनियर्स करना पड़ता है या आप उसको कॉम्पोजिट की आप लेयर दे सकते हो, उससे आप कवर कर देते हो. लेकिन आप टोट के कर लेते हो, इट वर्क्स, बट उसके आफ्टर इफेक्ट्स आप लोगों को नहीं पता होता है. इस वजह से वो फिर बहुत ज़्यादा बेकिंग सोडा इज नॉट एक और चीज़ भी मैंने लोगों से सुनी है वो जो Lemon and चारकोल coal. एंड कोकोनट ऑयल. लेमन एंड कोल को मिक्स करके वो कोल, हाँ, कोल. चारकोल. I wouldn't know of it, to be honest with you. You two buy the book, you know. Yeah, buy the book, you know. I would not, yes. No, I'm asking about क्योंकि बहुत सारे लोग ये देसी टोटकास का बुक करते रहते मतलब हैं. देसी टोटके में What do you suggest for I would suggest clean white teeth? for whitening purposes, I would say professional whitening. to be Professional honest. whitening. Absolutely, But I wouldn't. अच्छे खासे दांत हो जाते हैं? Absolutely, it depends. To be honest, it's the interaction of the material that you use and your own teeth. So it's patient to the product dependent. Okay. How many shades brighter it will become is linked with the product that you use and the patient's own teeth. So for some people it might go 6 shades brighter. For some Okay. it might only go 2 or 3 shades Oh, brighter. okay. So that is something which is not in your control. So it depends on how. So the color of your dentine. To be honest, there Okay. are many layers of your teeth, enamel. तो dentine. sessions होते हैं. Exactly. So they basically recommended is 3 sessions of 15 minutes each. How many months apart? Yeah. Oh, no, weeks apart? it's depend. To be honest, it depends on you, on your dietary habits. If you're having lots of coffee, tea, and all that, it will last you 6 months. If you're taking care, not very staining foods you're having, it will last you for maybe 9 months, a year for that Acha, matter. So yeah. But again, whitening is not for every teeth. Like
it depends on the cause, underlying cause of that. Okay. You cannot recommend every patient for the whitening. Absolutely. Like patients have in their mind कि मैं जाऊँगा क्लिनिक में whitening कराऊँगा and I will be like smiling. हाँ वही मैं कह रही हूँ कि not it doesn't work चमकदार for and shining. everybody. It's not like that. It's not for every person. So इसके लिए आपके डॉक्टर के साथ full interaction होना चाहिए, cause का पता होना चाहिए, and there are many ways. You can suggest them after knowing the proper cause. You can suggest them whitening. Whitening में भी in office होता है and home remedies होता है. होम रेमेडीज में आप ट्रेस बना के पेशेंट को दे देते हैं, घर में जाके वो कर लेता है। अच्छा, वो जो हाँ जी, जाके आप लगाते हो, एट होम उसको कहते हो। ओके। इन ऑफिस में होता है वो 1 आवर का सेशन होता है, इन ऑफिस में होता है एंड दैट इज फॉर 1 सेशन 2 सेशन 3 सेशन होता है, बट इट टेक्स अराउंड 1 hour and 30 minutes. It depends on the shade, how much shade, brighter shade you want. अच्छा। So प्रोफेशनल वाइटनिंग से teeth वो तो नहीं होते sensitive वगैरह? Initially, yes, they do become sensitive, but that only lasts for a day or two, which is understandable. So that can be overcome, but again, it varies from patient to patient. Agar if you are abusing your teeth, like you're having coffees, 10 cup of coffees in a day, or smoking, if you are chain smoking smoker, also it stains your then teeth. definitely it lasts. If usual recommended time period is lasts for 2 years or 1 year, up to 6 months. But if you are abusing, if you are not taking proper care, then it can last only 2 to 10 months. This wala part I'm going to actually put in my social media also, because this people think that you can do क्या कहते हैं? You can do whatever you want and it's not like that. दांत It's करा not दिए like- तो yeah. करा दिए। And second thing is that you can go for veneers. That is nowadays in too much in dentistry. Demand and dentistry, that Hollywood smile, because they want perfect professional smile. Yes, Exhibit exactly. A. Smile. Yes, smile. इसके अलावा I would come back to you and आप लोगों से छोटा सा rapid fire करूँगी क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। Rapid fire is not anything else, it's personal. Okay, people if they want to know what when they go to this doctor or this doctor, तो ये लोग है क्या, that sort of thing. Favorite drink? Fanta. आप Fanta, ये देख Fanta वाली है आप? Right nowadays, a mango milkshake. हाय राइट नाउ वाले भी होते हैं। अच्छा Yes, आपने absolutely. No, but I would have said Mountain Dew, but since I'm a dentist, I will not. I like Mountain Dew. Exactly, I love Mountain Dew myself. So. Okay, inspiration and why? Mom. Mom. Yeah, because I know. Because she's mom. No, I know when my father passed away, and I know how she took care of us, and she stood our side like a father. So she's my inspiration. Whenever who asks me, I say my mother. Definitely, she's the one. She gave us the confidence of living. Professionally, Dr. Zirak, who was my mentor. Life-wise, my father. I get the perfection from him. Allah bakshe, he passed away 2009. And so I look up to whatever I do. Whatever I do. legacy is left behind. Yes, absolutely. If I can't make things better, at least I can match it to his level. I think when it comes to hard work, I also follow my dad. Because he was a different level of hard work. And if I look at nature and dealing with life, I take it from mom. Absolutely. My mom is like ubashi. Like हो जाएगा. Allah She's got that Allah बखैर की. Like, and I actually live by that. I have to learn some more Pashto. सिखा दूंगी. हम आपको सिखाएगा. Summer or winter? Winter. अच्छा. दुबई में रह के आपने ऐसे क्या किया? जो आपको मिल ही नहीं सकता. एक महीना मिलता है. कहीं जा ही नहीं सकते भाई. Winter. I love winters. We had a brunch. Winters. You get to wear better clothes, हाँ, fashion हमारा सभी निकलता है. More layers. हाँ, more layers and nice coats and nice boots and oh my God. Absolutely. अच्छा, what is the most? I would say, what is the latest thing happening in your life? ऐसी like जो सबसे it keeps nothing. The TV show. This is the latest thing. नहीं इनकी थोड़ी तो पता है. जी हाँ. Right now, yeah, I'm
Professionally, I'm doing my specialization in dental implants. Okay. So that is what is happening nowadays. Okay. Yeah. Otherwise, yeah, I've bought a cycle for myself, waiting for Oh, winters. मैंने तो सुना था आपकी मंगनी हो गई थी. मैं तो वो तो होगी. I will. That is You not- heard this, huh? You heard this, huh? I know you're listening to this, and I know. तो आप happening चीज में नहीं आ रही हैं. Nah, it's been what 6 months now, so फिर भी, that's फिर old भी. news. No, that's not. She's important news. Absolutely, हाँ. the most important. The news. most important. I- देखो भाभी मैंने. Exactly, no You owe doubt. me one, huh? हमरे से बिला लरोड़े. Okay. Do you eat cake? Yeah. What do you like? What flavor or whatever favorite? Cake. हाँ. मैं डेंटिस्ट से honey क्या cake. Exactly. मैं डेंटिस्ट से क्या Favorite drink, favorite sweet. guys I'm trying to show you guys that dentists are human. Humans too, मुझे after देख all. के तो लगता ही होगा कि मैं मतलब स्वीट से आई एम अ स्वीट पर्सन सो You're a sweet person. No pun intended. Yeah. You're a sweet person. हनी केक Honey cake. या Up. I'm very basic pineapple and cream. That is basic. That's Basic is what I like. Sponge vanilla वाला यार. That नहीं is वो basic. बेसिक इज लाइक वो ना बचपन वाला क्रीम केक आया हाँ, उसमें डाइव मार ली मुंह डाल दिया, खा ही एग्जैक्टली लिया. मम्मी ने पकड़ा तो यहाँ पे पूरा केक है, Exactly. मम्मा मैंने नहीं खाया. द बेसिक क्रीम एंड पाइनएप्पल ऑन टॉप एंड ऑल मैंने तो नहीं खाया कुछ भी Okay. How do you start your day? डेफिनेटली अल्लाह का शुक्र है कि दैट आई सॉ अनदर डे एंड आफ्टर दैट डेफिनेटली ब्रश Definitely brush your teeth. You've spoken like a true dentist, no? For me, I check my schedule. That's how I wake up. When I You wake wake up, up. नहीं. You wake up and you're like. exactly. ये आज किसकी ये वाली भी आ रही है. ये वाली भी आ रही है. So we have an email generated at 6:45. So when I wake up, I have to check my schedule, and that's how I start my day. Wow. अच्छा क्योंकि doctors are supposed to be intelligent, you know. So favorite subject in school? Mine was biology. In school, proper like doctor college, हाँ biology. Like I hate chemistry. I always और यही वजह हुई pharmacology भी मैंने hate ही किया था always. लेकिन biology is my favorite. Biology, okay. Biology. I'm a bio student also, by the way. I don't know how I ended there, but I try to help my dad fulfill his dream. English for me. English favorite? Yes, absolutely. And what because I used to read books. I read English, I talk English, I walk English, I sleep English, I sleep I am an नहीं English वो boy. मसला नहीं वो ये था कि yeah most of my gifts when I would be like whenever I had a birthday or something they would be books. I would be gifted books and I used to Wow. look forward to reading them. Nice, So nice. I was that mummy daddy sort of a bacha. Yeah. Nice. अच्छा बच्चा था. What did you hate? No, I was pretty much in everything to be honest. Never hated liked anything. everything? Yes, I used to. I don't know you anymore, Shakir. Which subject I hated? Yeah. Oh, अच्छा subject wise. स्कूल में यार मैं स्कूल की बात कर रही हूँ. Physics I think would Physics, be I yeah, think physics yeah, was my least favorite. I won't say Least hate, favorite. but yeah, least favorite. What advice would you give your younger self? Trust yourself. Trust Be yourself. whatever you are. Be yourself, whatever you are, and keep faith in yourself. जब आप छोटी थी तो आप अपने आप को ये you Yeah, me, I would tell myself not to strive for perfection all the time. I would tell myself to jump into it, into the river, and then start paddling from there, as opposed to पहले से सीखो how to paddle and then, because a lot of doors have closed that way where I was waiting for the absolute right time. But it's never the right time. It's always you have to have You have to faith. make it, yeah. Yes, you jump forward. Have I that was never faith. ever that kind of a person जो plan करके चले. नहीं मैं हमेशा मैंने शायद मार भी इसलिए खाई है in whatever ways. मैं ज़्यादातर I don't even वो कहते हैं ना कि I don't get demotivated also very this thing because मैंने कभी इतना वो सोचा ही नहीं होता उसके बारे में. I जो was है कर the लिया other way forward around. Whatever has come my way, yes, I've had dreams. I wanted things a certain way, but नहीं होता है. I'm like okay. I think that's what's helped me a lot in life. Understood. So it was our show has almost come to an end. It was a beautiful show. I think one of the things that I enjoyed is that dentists, like all other people, are also humans, and they do have a life besides just looking at your teeth. Do follow their advice, I would say, Absolutely. because if you don't, you lose, and health is wealth.
There's no denying And your that. teeth are your first identity. Seriously. Period. Yes, yes. नहीं ऐसा होता भी है मतलब if I'm interacting with someone my eyes are on Mere, forget, even I'm not even a Looking in their dentist. I fall for a person's smile, guys. I actually fall for a person's smile. Anyway, I would want Dr. San to give a little small message to the world before we go. Anything. It can be anything connected to life, dentistry. Dr. San. मैसेज सिर्फ यही है that always trust yourself and never compare yourself with someone. Yeah. Be what you are. Don't try to put yourself in someone else's place, because if you will try to do that you will lose your dignity, you will lose your identity, you will lose everything. So be yourself, I would say. Thank you so much. Nice. ये मेरे लिए सबसे पहले था. हाँ. Dr. Shakir. I'm not very good at giving messages, to be honest. आप इतने सारे messages तो हमें देते रहते हैं. बीबी किधर हो बीबी? You need to brush your teeth, बीबी. Absolutely. But yeah, what I would That's what he say- calls me, बीबी. Yeah, it's an elder sister, no? So Yes. yes, my message would be, just do what you're good at doing. Yeah. Follow your passion, and that is me giving a Let message. life flow, I would say. Absolutely, and that's Let me life giving flow. a message to myself as well. It's not just one thing that you should do. You can always choose the two different paths. So one should be your profession, the other can be your passion. Yeah. But that is something I'm trying to explore myself. So Yeah. it's not Mango just shake क्या था वो? nahi, right now it's gardening. Gardening, yes, yes. So So you have a nice garden now. Absolutely, not here, obviously in Pakistan, but yes. Yeah, but we should be able to see a bit of jhalak. I will be more than happy to show you guys. ठीक है, इंशाल्लाह. Inshallah. I've had an amazing time and शाहिद कब से डिंग 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 करे आपको कुछ गाना शायद जोर का है. जोर का है. Guys, इंशाल्लाह अगले हफ्ते मिलेंगे with totally new guests, a new topic to discuss. Till then, thank you so much for Thank being you on for our show. having We've us. had an amazing show, very informative. ऐसे ही हम ट्राई करेंगे कि like चाहे वो म्यूजिक से रिलेटेड हो, कहीं से भी रिलेटेड. If you are someone who has something to offer and show the world also and you want to come here also, हमें राब्ता करें. आप हमारी स्क्रीन पे भी नंबर्स चलते रहते हैं. हमारी पूरी हमारी वेबसाइट भी होती है. We have a Instagram page as well, Facebook पे भी है, हर जगह पे हम, Twitter पे भी मौजूद है, हर जगह मौजूद है. You can get in touch with either me or the team and definitely we can see you here as well. तब तक के लिए अगले हफ्ते तक अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान. Over to you. साडा कलियां जी नहीं लगना, साडा कलियां जी नहीं लगना, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना. सानू एक पल चैन न आवे, सानू एक पल चैन न आवे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना. किसे दाया परदेस न जावे, छोड़ा किसे दे पेश न आवे, सानू एक पल